Welcome to the IVM Podcast Network. Hi, this is Amit Doshi, and I wanted to thank each and every one of our listeners. It's been 2 years since I founded IVM, and it's been an amazing 2 years. We wanted to learn a little bit more about who is listening to our shows, and so we put together a short survey. The survey is anonymous, and we aren't going to be collecting any personal information. I would really appreciate it if you could take a couple of minutes out of your day and go to ivmpodcast.com/survey and fill it out. Thanks, and please keep listening. You're listening to TFG Fantasy Cricket. हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन ने मैच जिताया. बिल्कुल बिल्कुल. कौन सा मैच की बात कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स यार, तुम किसको पूछ रहे हो यार? सिलेक्टर को पूछ रहे हो किसने जाके सेंचुरी मारा? ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया. Yes, hopefully तुम्हारा you must have had a good game over there. It was a great team. Ashwin अमेजिंग. उसके बाद उमेश यादव. मेरे को याद है किसी ने हमें पूछा था, हमें किसी ने पूछा था कि अश्विन कैप्टन सही होगा, विराट कोहली नहीं. शायद आपको जवाब मिल गया हो. और वाइस कैप्टन एक और मेरे को याद है, वाइस कैप्टन भी पूछा था, चेतेश्वर पुजारा आर यू श्योर? शायद आपको जवाब मिल गया होगा. एक और किसी ने हमें लिखा था, नेथन लायन. आप पगला गए एकदम. आपको तो हेजलवुड को क्यों लिया? नेथन लायन को लेना चाहिए था. I think he must have got his answer. Yes. Anyways, welcome guys. नहीं. Welcome से पहले, our team was very, very nice. We are very, very happy and proud about it. Finally. Yes. So welcome guys to a new episode of TFG Fantasy Cricket Podcast. Today we are going to discuss about Ireland versus Afghanistan, which is happening in India. सोचो भाई, थोड़ा weird है. टूर्नामेंट हो रहा है, अफगानिस्तान होस्ट कर रहा है आयरलैंड को. हम यहाँ इतना मेहनत कर रहे हैं, स्टूडियो में जो हो रहा है वो आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन देखो लगभग कुछ 1.5 घंटे बचे हैं. वी आर ट्राइंग. दिल्ली एनसीआर साइड जितने भी फैंटेसी प्लेयर्स हैं ना, सबने वहां जाके बैठना चाहिए. प्लीज आप लोग नोएडा जाओ, मैं आपसे कह रहा हूँ, बिकॉज यू विल गेट टू सी सम गुड क्वालिटी क्रिकेट. एंड आपको देखो, ये सब मैचेस के टेलीकास्ट नहीं होते हैं, सो लाइक निखिल सेड, गो टू द वेन्यू. टिकट्स भी शायद फ्री एंट्री होगा. देन यू विल नो कौन लेग स्पिन करता है, ऑफ स्पिन करता है, वन डाउन आता है, कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, ड्रिंक्स देता है, कोच है, जो भी है सब कुछ इजीली. अजगर स्तानिकज़ाई है कि नहीं है? स्तानिकज़ाई. लेकिन मैं आपसे एक शर्त लगाता हूँ, अगर आपको मैं ये नहीं बताता कि आज असगर स्तानिकज़ाई नहीं है, और अगर आप फील्ड पे होते, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. Yeah, true. That's how it is. Yeah. Other than Shehzad and Mohammad Nabi. That is right. I mean, and maybe Rashid Khan to an extent. People wouldn't be. So yes, that's the news. It's a shocking news. We don't know why. After searching a lot, we got the information that Ashgar Stanekzai won't be captaining the Afghanistan team against Ireland in the T20s and ODIs. So, obviously, they have made a few changes in the batting department. Najib Tarakai is back, and so is Usman Ghani. One of the two will open with Mohammad Shehzad. There is one interesting guy, Shafiqullah Shafiq, who did very well against Zimbabwe A. Yeah. सोचो हमको क्या क्या कवर करना पड़ रहा है आपके लिए. Zimbabwe A versus Afghanistan A. So this guy did very well. He could bat at number 4. Then obviously you have the all-rounders in Mohammad Nabi and Gulbuddin Naib. Yeah. Then you have the bowlers. अब bowler में निखिल मैं आपसे बता रहा हूँ, इनके पास इतने काबिल स्पिनर्स है. हमने देखा डेजर्ट T20 चैंपियनशिप ये लोग जीत गए, और इन्होंने क्यों जीता? बिकॉज इनके स्पिनर्स चल गए. Dockrell especially. You are talking about yes, Afghanistan. And the same team traveled to Zimbabwe and they beat them 3-2. It was a very close series, very productive for us. And let me tell you, other than Rashid Khan and Amir Hamza, Amir Hamza is also known as Amir Hotak. Okay. So there is a lot of confusion with the names. And राशिद खान का भी कुछ आगे नाम है. तो अगर आप कहीं पे भी किसी भी पोर्टल में खेल रहे हो, आपको नाम से कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज गो स्ट्रेट गूगल मारो, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. क्योंकि कई बार ऐसा होता है, डिफरेंट नाम तो मैं प्लेयर नहीं लूंगा, और बाद में पता चलता है अरे बाप रे ये तो वही प्लेयर है. So better be careful. And the spinners, I think Karim Jannat is there, Farhad Ahmed is there. These guys, इनमें से कोई एक ही खेल जाएगा, क्योंकि दावलत जादरान है, शपूर जादरान इज देयर. शपूर जादरान का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अनफॉर्चुनेटली अपने पास इतना टाइम नहीं है बात करने के लिए, बट ही कुड गेट अ लुक इन. दीज डेज ही इज प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली. ही लिव्स इन दिल्ली. बहुत प्यार से हिंदी बोलता है या फिर उर्दू, अगर आपको वो अच्छा लगे तो. So all these guys have... He's a tall guy. That's right. Yes. He's the tall guy who tries to bowl very fast, but unfortunately itni pace nahi hai. But having said that, he's very skillful.
He did very well in the 2015 World Cup, I remember. In the 2014 World Cup in Sri Lanka, T20 I'm saying. So बहुत काबिल है. So these are the options, you know, they have. Obviously, wicket keeper will be Mohammad Shehzad. Yeah. But other than that, I think it's a fairly settled lineup. मैं आपको probable 11 बता दूं अभी उनका. Like I said, Shehzad opens with Ghani और Tarakai. Najibullah Zadran, Nikhil's all-time favorite. number 5, number 6, he's going to be a floater. Stanisla नहीं है तो Nabi, Gulbuddin Naib, Shafiqullah. Then there is Shenwari, Samiullah Shenwari. Bowlers Rashid Khan, Dawlat या Shapur में से एक खेल जाएगा. There is no Mirwais Ashraf in this team. Okay. And obviously, like I said, Hamza or one of the Janat or Farid Ahmed will be there. Okay. So Okay. that's Going on to Ireland. Afghanistan for you. Going into Ireland, Ireland have made quite a few changes. Okay. Boyd Ranking has been called back. He was rested. Peter Chase won't find a place in the team. Joshua Little has come back. Openers will be William Porterfield. Balburney is not a part of this team. Stuart Pointer is also not there. I think the innings will be the partner for William Porterfield will be Paul Sterling, followed by Gary Wilson, Kevin O'Brien. Niall O'Brien is not there. ठीक है. Middle order, George Dockrell है, Stuart Thompson है, Greg Thompson है, and then the bowlers obviously. George Dockrell है? George Dockrell is there. I want to talk about these two spinners, Jacob Mulder one and Andy McBride. These two did very well in the Desert T20 Championship. I wouldn't be surprised if they field all three spinners in George Dockrell, Jacob Mulder and Andy McBride. Okay. So unka bowling lineup I think will comprise of three spinners, and the seamers will be Craig Young, Boyd Ranking, or somebody like I said, that guy McCarthy. Barry McCarthy is there, but I'm not sure if he's going to get a Look in. There's one more guy. Joshua Little. Joshua Little, yeah, that guy. Yes. Okay, So that's their team. Our fantasy team, budget का problem होने वाला है. Uncertain है, playing 11, probable 11. किसी को कभी भी बेंच किया जा सकता है. क्या आपने सोचा था 3:30 बजे आपको इतनी बड़ी चोट लगेगी कि टिम साउदी टीम में नहीं है? सोचा किसी ने? Benched for no reason. Benched for no reason. किसी ने सोचा कॉलिन डी ग्रैंडहोम, जिसने निखिल को हराया था, जो बैट्समैन नंबर 7 पे बैट करता है, वो 3 पे आके उसने इतने छक्के लगाए कि he lost that match. He also got benched. So uncertainties बहुत है. कभी कभार लॉजिक भी नहीं होता कई डिसीजंस में, लेकिन that's how the game But New works. Zealand is, you know, they are known to They are do known such to do kind- this. yeah. They have this very dirty habit of making sure that fantasy cricket lovers का दिन खराब जाए. और एक दिन नहीं, यहाँ पे 5 दिन खराब जाएंगे. So that's how it is. Captain, vice captain, I would say stick with either Mohammad Nabi, Rashid Khan, Mohammad Shehzad or Kevin O'Brien. Nikhil, do you have anything to say on this? Because इनके अलावा आप किसको लोगे यार, मतलब. और हमने क्या किया है? We have picked Kevin O'Brien, who's going to bowl and bat, and Rashid Khan. Rashid Khan is an all-time favorite. One of the reasons he got picked in the IPL because उसका प्रदर्शन बहुत जबरदस्त रहा है. He is going to he has got so many variations. The wicket in Noida will aid his bowling, and with so much guile and spin, and he's a very clever bowler. I think he's going to completely bamboozle the Irish. So you pick him as a vice captain. Also, you're looking at Naib or Shenwari in all-rounders? दोनों भी नहीं. The problem is, जैसे मैंने आपको कहा निखिल, बजट का एक प्रॉब्लम है. प्लस आप अफगानिस्तान के कितने बॉलर लोगे? नाबी है, राशिद खान है, हमजा है, कितने बॉलर के साथ आप खेल सकते हो? एंड देन यू पिक आयरलैंड के केविन ओब्रायन, जेकब मुल्डर, एंडी मैकब्रायन. जॉर्ज डॉकरल लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, बिकॉज अगर हम डॉकरल लेते तो हमें नाजिबुल्लाह जादरान छोड़ना होता. नाजिबुल्लाह जादरान, बिकॉज अजगर स्टानिक्जा इज नॉट प्लेइंग, कुड बी प्रमोटेड. और हमने देखा है, सबक सीखा है एक बार. तो शायद इसीलिए हमने उसको लिया. विलियम पोर्टरफील्ड, पीपल माइट से अरे क्या फॉर्म में है, मेरे ख्याल में वो T20 में अट्टर फ्लॉप है, इसीलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया. वी हैव picked Sterling. You can only pick one. And we go by class, not form. That's why we pick Sterling. That's it. And keeper is going to be Mohammad Shehzad. Yeah, that's a very difficult choice in between Mohammad Shehzad. Actually, Mohammad Shehzad and Gary Wilson में it's not easy. The reason we pick Shehzad is क्योंकि वो ऊपर खेल जाएगा और Gary Wilson नीचे आता है. So these are the things you have to consider. Don't be surprised कि आपको अगर कोई selection call देखे, अरे केविन ओब्रायन बेंच हो गया. Don't be surprised. That's how. It's a big series. I think they are playing a T20 ODIs and then there is a 4-day match. 4-day Yes, test. yes. So possibility ऐसा भी हो सकता है निखिल कि दोनों टीम rotation policy, you know, they have this thing going on where they want to give exposure to everybody. So that could happen. And when that happens, suddenly आप देखोगे, अरे यार मैं 2 शॉट खेल रहा हूँ, 3 शॉट खेल रहा हूँ. तो हमने कोशिश करी है. We have read all the reports. But at the end of the day, like I always say, we are not directly connected to any camp. So good luck. बेस्ट होगा कि दिल्ली वालों
चले जाओ नोएडा, आपको ज्यादा खबर मिलेगी हमसे और फिर आप पॉडकास्ट करो, हम सुनेंगे. Yes, on that note, guys, the article is up on our website, thefangarage.com. You can go and check out our team over there. You can connect us via our Twitter handle, TFGFantasy11, our Facebook handle, Fantasy Pandit. You can listen to our podcast on Indusworks Media, iTunes, SoundCloud, Audio Boom, and definitely on YouTube. Subscribe, share, like, and comment. And guys, you can also download IBM Podcast app. There are a lot of great podcasts over there. You can download it on Android and iOS. Till then, take care. Bye-bye. Hey man, just help me out, man. I need some podcast, man. I haven't had a fix in a week. Just need some. Don't you worry about it. I got podcast galore for you, man. Just go to ivmpodcast.com. You can also find us on Facebook, Twitter, and Instagram. Thanks, man. I'm gonna check it out.